what are the mistakes that we should avoid during NEET preparation? Obviously, you all are over here, you all are preparing for NEET and your target is to crack it, and definitely you will do. But before that, I want you to avoid some of the mistakes that most of us commit. So, hello everyone, my name is Sakshi Priya and I'm a first year MBBS student at Bhopal. Last year, even I gave NEET, just like you all, even I was preparing last year and I got 675 marks and मैंने बहुत सारे mistakes किए थे. So, I think that my journey and my mistakes are worth sharing with you so that uh, you don't repeat the mistakes that I did. So, what are we going to have in this session? डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे आए हो एंड यू मस्ट बी क्यूरियस कि आखिर इस सेशन में क्या ऐसा खास होने वाला है दैट यू शुड स्टे कनेक्टेड. सो मैं बता दूं, इस सेशन में वी आर गोइंग टू सी 10 गोल्डन मिस्टेक्स. तो गोल्डन मैं क्यों बोल रही हूँ मिस्टेक्स को? तो हेलो एवरीवन, जो भी अभी नए लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, आई वांट ऑल ऑफ यू टू इंटरैक्ट विथ मी बिकॉज मैं इस सेशन को चाहती हूँ ये बहुत एंजॉयबल सेशन हो. मैं यहाँ पे सिर्फ ज्ञान नहीं देती रहूं, मैं ज्ञान दूं भी, आप लोग इंटरैक्ट करो. व्हाट आर योर थॉट्स बेस्ड ऑन दिस पीपीटी कि आखिर क्या क्या आपने क्या मिस्टेक किया है, आप क्या आखिर शेयर करना चाहोगे? इफ यू वर देयर ऑन माय साइड तो आप क्या बोलते? तो आई वांट यू टू इंटरैक्ट. सो यस, सो 10 गोल्डन मिस्टेक्स. तो मिस्टेक्स को मैं गोल्डन क्यों बोल रही हूँ, क्यों आखिर वो गोल्डन है? बिकॉज मिस्टेक्स जो होते हैं ना वो काफी प्रेशियस होते हैं. दे आर रियली प्रेशियस बिकॉज वी लर्न अ लॉट फ्रॉम मिस्टेक्स, बी इट आवर्स और अदर्स. दूसरों के भी मिस्टेक्स हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं. एंड देयर इज अ कोट राइटली सेड, अ स्मार्ट मैन लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स बट अ वाइज वन लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स. सो डेफिनेटली एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू बिकम वाइज. स्मार्ट तो बनो ही, स्मार्ट स्टडी कर रहे हो आप लोग, आई डेफिनेटली बिलीव ऑन दैट. बट मैं चाहती हूँ आप लोग वाइज बनो, आप लोग मेरे मेरे मिस्टेक से सीखो. ऑल्सो यहाँ पे सिर्फ मेरे मिस्टेक्स नहीं है, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं एम्स भोपाल में हो या कोई और मेडिकल कॉलेज में हो जिन्होंने नीट निकाला है, उन सबके भी मिस्टेक्स में कंपाइल करके लाई हूँ. ऑल्सो यू गाइस कैन आस्क योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स. कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क. पर्सनल डाउट हो या फिर कोई भी प्रिपरेशन में कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, you can write in the comment box, chat box, so that I can help you in a much better way. Also, I will tell you in this session how to correct those mistakes. Definitely mistakes सब लोग करते हैं यार, मैंने तो आज तक बहुत सारे mistakes कर रखे हैं. And trust me, मैं बहुत regret करती हूँ कि क्यों आखिर मैंने वो क्यों मतलब मैं बाद में मुझे क्यों realize हुआ कि मुझे पहले मैंने क्यों नहीं rectify किया वो mistakes. So definitely I want. Okay, I can see you all asking questions. So Sagar Prajapati, hello Sagar, and he's asking which number I get in AIMS for admission. Okay Sagar, so your question it's really बहुत like मैं भी जब तुम्हारी जगह थी when I was preparing, मुझे भी like always I used to search this on Google. मेरे हिस्ट्री में ना पहला क्वेश्चन ये होता था कि what number should I. बट बाद में मैंने रियलाइज किया दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मिस्टेक कि हम नंबर के पीछे भागते हैं. बिकॉज आप देख रहे होगे लाइक एवरी ईयर न्यू कट ऑफ इज कमिंग, कितना इजी होते जा रहा है पेपर का लेवल. एंड बिकॉज ऑफ दैट द कट ऑफ मार्क्स इज इंक्रीजिंग. और इस साल किसने एक्सपेक्ट किया था यार कि 700 चला जाएगा कट ऑफ एम्स दिल्ली के लिए? तो इट्स रियली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है ये कहना कि व्हाट नंबर रैंक बेसिकली रैंक डिसाइड करेगा. अभी आप पूरे फोकस से अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दो. ओके, don't worry about the marks or everything. By the way, which class are you in, Sagar? Yeah. Till then, and also at the end of this session, I am going to show you a glimpse of my medical life in AIMS Bhopal. तो आप लोगों में से बहुत कोई होंगे जिनको ये क्वेश्चन होगा, यार यहाँ पे बैठी हुई है, क्या ये सच्ची में एम्स भोपाल में या फिर ये झूठ बोल रहा है? तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को एंड में दिखाऊंगी अपने एम्स भोपाल कॉलेज लाइफ के थोड़े से ग्लिम्पसेस. एंड स्टिल देन स्टे कनेक्टेड. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर मिस्टेक्स. द वेरी फर्स्ट मिस्टेक, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो सब लोग करते हैं, चाहे वो नीट प्रिपेयर कर रहे हो, जेई प्रिपेयर कर रहे हो या कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो. तो माय फर्स्ट मिस्टेक वाज प्रोक्रेस्टिनेशन. यार मैं ना मतलब हम लोग में से कोई भी जब उनके पास इतने सारे सिलेबस होते हैं ना,
तो प्रोक्रेस्टिनेट पक्का करते, लाइक मैं तो बहुत करती थी। तो मैं, ये फर्स्ट मिस्टेक होता है, लाइक हमारे पास बहुत सारा सिलेबस होता है, देखकर ही हार मान जाते हैं, अरे यार नहीं होगा यार, चल कल करते, कल से नया स्टार्ट करेंगे एवरीथिंग। या श्योर, श्योर श्रुति, श्योर नेहा, आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। ओके सागर, सागर has again written, एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल में कुछ डिफरेंस लगा आपको? यस मैम। सी, see Sagar, if we talk about the studies, the academics, then I don't know, like I have not been to AIMS Delhi and I've not seen how they are teaching, but in AIMS Bhopal definitely I can say that teaching amazingly, and today if I'm learning from them now, I'm not just learning, I'm understanding the concept, so I can surely like tell you that AIMS Bhopal is among one of the best colleges. Plus the infrastructure, you can surely Google the infrastructure, the rooms, and everything. It's newly built in 2012, and you can see how amazing the campus, the infrastructure is there. You are totally going to enjoy your life. Academics plus the extracurricular activities, everything's happening over there, and such. Okay, so Sagar has again asked, "Ma'am, कितने salary मिलेगा fresher को?" Well, freshers they don't get salary, but we surely get salary in our internship year, and it goes on increasing every next year according to the value. So when you come to AIMS Bhopal or any other AIMS or any of your dream colleges, you can surely get to know that accurately. Okay. So again, Shubhangi has asked, "Ma'am, can you please first guide us with the NEET preparation stuff?" Okay, yeah, sure, Shubhangi. So Shubhangi has requested for this. So surely, so Shubhangi, I'll first finish my PPT and thereafter I can talk about the college stuff and all. So yeah, sure. So first thing is procrastination. So definitely, now अब मैं पूछूंगी like why do you all procrastinate? Like why do I procrastinate? I asked this question myself also, to myself also. And I got the answer that I'm not enjoying studying. I'm not enjoying. Why do we just go on playing games, go on traveling? Because we are enjoying. We don't procrastinate. कोई दोस्त आता है, then वो पूछता है चलोगे बाहर, then we say तुरंत हमारा आंसर होता है हाँ हाँ चलेंगे, because we enjoy that. So you have to enjoy studying. Study your syllabus as if you're playing some video game. कुछ video game खेल रहे हो with levels and rewards. हर level के बाद कोई एक chapter finish कर रहे हो, make that a level, and then the next level, climb up to the next level and do the second chapter. And once you do first chapter, reward yourself. Just like video games, it will be really fun, and trust me, it is. And the best way to avoid is to start at the moment. अगर आपने कुछ भी सोचा ना, ओके कि हाँ मुझे कोई भी चैप्टर करना है, कल करूंगी, नहीं मत करो यार, मत करो, अभी के अभी, जस्ट नाउ decide that right now I have to start, I have to finish, and then do whatever you are doing. Okay. The second thing, that's really okay. So Vishaka has asked how to enjoy study and how to get interested in study. So Vishaka, I hope I've answered your question just now. Now the second thing is, don't waste time. Trust me, like every one of us in our preparatory phase, some or the other where हम लोग ना distract हो जाते हैं, हम लोग time waste करना start कर देते हैं, maybe because of procrastination or some other thing, or maybe because हम लोग irrelevant topics की तरफ चले जाते हैं. So I don't want you to waste time, because आप लोग students हो, you are in competition, your time is really really precious, बहुत precious है. इसे waste बिल्कुल मत करना in making impractical timetables. Like हम लोग क्या करते हैं, what do we do? We before starting to study, we take a sheet of paper और उस पर अपन लोग क्या करने लगते हैं, एक टाइम टेबल बनाने लगते हैं कि 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, पर हम लोग उठ कितने बजे रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं. सो दैट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट अस. हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कुछ भी सोचे ना, तो right there we have to make that happen. We don't have to overthink or overdo. कई बार ऐसा होता है हम लोग डेस्क पर बैठे रहते हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं, एंड एट द सेम टाइम हम लोग कहीं और सोचने में लग जाते हैं that oh my god, I have become some air one,
कुछ ऐसा, मतलब कुछ भी अपन लोग ड्रीम करने लग जाते हैं, ये सबके साथ होता है। हाउ मेनी ऑफ अस यूज हाउ मेनी ऑफ यू फेस द सेम प्रॉब्लम? चैट बॉक्स में बोलो सो दैट आई कुड नो। तो बहुत लोग, हम लोग ओवर ड्रीम करने लगते हैं, फिर ओवर थिंक करने लगते हैं। दैट इज रियली कॉमन। तो वो मत करना, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, so Vishaka has asked, what is the right way to study easily? So see, study, I guess, first of all, you have to make it interesting, and that is upon your hand. Suppose you like games, तो उनके लिए मैंने बोला कि you can make it, you can play it like as if you are playing some game. What do you like, Vishaka? What do you like? Yes, Agar, I will unmute you at the end of the session, जहाँ पर हम लोग question answer round करेंगे. You all can ask all your doubts, one-to-one interaction होगा, and definitely stay connected till then. और बहुत बार अपन लोग के साथ ऐसा होता है ना कि हम लोग के मार्क्स, लाइक हम लोगों ने कुछ मॉक टेस्ट दिया, तो मार्क्स ऐसे आ जाते कि हम लोग रोने लग जाते एक हफ्ता, लाइक वी एंड अप आवर 1 वीक वेस्टिंग दैट एंटायर वीक जस्ट बिकॉज ऑफ वन मॉक टेस्ट। तो वो नहीं करना है। 5 मिनट का ब्रेक लो, रो, जितना कुछ सोचना है सोचो, बट आफ्टर दैट स्टार्ट अगेन। ऐसा होना चाहिए जोश। एंड इसके बाद ना तुम्हें खुद डिफरेंस फील होगा। The third thing is studying irrelevant topics. This happens with most of the students. जो लोग कोचिंग जाते हैं, especially with those people. क्योंकि हम लोग जाते हैं ना कोचिंग, तो हमें मॉड्यूल्स मिलता है। मॉड्यूल्स के साथ the teachers refer some other books. Like बहुत बहुत अजीब अजीब बुक्स रेफर करते हैं। I personally don't refer them कि मत पढ़ो यार। Like most of your faculties, your teachers, your mentors must have told you, rather than studying 10 books once, study one book 10 times, because that's really important. When you study one book 10 times over and over again, now you become confident. Suppose आपने एनसीईआरटी ली, एंड ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी इज द फाउंडेशन। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एनसीईआरटी अगर आपने पूरा पढ़ लिया, शिद्दत से पढ़ा है, हर एक लाइन समझिए ना, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प। सो आई कैन सी क्वेश्चंस लाइक, can you please say any NEET reference books? Well, I personally won't tell you any reference books. Like, if you want to understand NCERT, no, you can go for some of the modules that the coaching centers, like Allen modules and Allen modules. Over there, the NCERT lines are given and the description, their explanation is given. So you can refer to those. Otherwise, I would say suggest you to watch some YouTube videos देख सकते हो to clarify your basic doubts, basic concepts. Otherwise, don't go for more books to study. अगर theories पढ़ना है तो मत पढ़ो उतना. Okay? Go for notes. Go for YouTube. Go for these things. NCERT बहुत अच्छे से करना, शिद्दत से करना. That is really important. Okay, Vishaka has asked how to study or understand the NCERT. Well, एनसीईआरटी पता है ये, लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास 11 ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लाइक एनसीईआरटी रहती थी एंड आई डिड नॉट नो कि आखिर कैसे पढ़े। आई जस्ट यूज्ड टू रीड, आई यूज्ड टू थिंक यार इतनी पतली सी बुक है, एंड उसके बाद लोग बोलते हैं जस्ट स्टडी दैट। एंड हम लोग को कोचिंग में कितने सारे मॉड्यूल्स मिलते हैं, 6 मॉड्यूल्स उधर, 6 मॉड्यूल्स इधर। तो मुझे लगता था यार एनसीईआरटी क्यों बोलते हैं, बट देन व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग ना, तो आप जैसे जैसे स्टार्ट करोगे ना, वैसे आपको समझ में आना पड़ेगा, आ जाएगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा ओके फ्रॉम हियर द पीपल आर आस्किंग द क्वेश्चंस। तो आप जब दोबारा पढ़ोगे एनसीईआरटी, तो देन यू विल अंडरस्टैंड ओके क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन दिस वे। एक एक लाइन में जो एक एक वर्ड होता है ना, ऑन, वेयर, अराउंड, ऐसा ऐसा चीज होता है ना, ये सबको बहुत डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है। सो दैट हैपेंस विद प्रैक्टिस। एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग आई वुड सजेस्ट you do your notes, your if you go to any coaching classes, you can refer to the modules over there. And for basic concepts, if you don't go to any coaching center, you can refer to the YouTubes. There are many YouTube channels आप जा सकते हो, and trust me, they are going to benefit you. Yeah, so I would suggest कि नीट पर स्टिक रहना यार, ज्यादा मत करना। बायो में आई नो कि कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो समझ नहीं आती है, एनसीईआरटी में लाइन नहीं रहती है, तो वो अपने मेंटोर से पूछो। ओके ओके, सो विशाखा, आई वुड सजेस्ट कि यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम फीलिंग रियली नाइस
that you ask me so many questions. So I would suggest कि थोड़ा wait कर लो, all these mistakes पहले सुन लो, and thereafter in the question answer round we'll have one-to-one interaction. Over there we can deal with your questions more nicely. So yeah. So stick to the target, stick to NCRT, okay? Even if you go to coaching and have abundant, oh no, it's not, there's nothing to say sorry, Vishaka. It's really nice. I'm really delightful to see. Uh, I can see your hand raising, huh? I'll surely answer your question. I'll unmute you also once I'm done with the presentation. Till then, you can ask all your questions in the chat box. I'll be answering them after I'm finishing this presentation. Okay? Okay. So, yeah. Even if you're going to any coaching center, most of us, कितने लोग यहाँ पे coaching जाते हैं? How many of you have joined coaching classes or coaching classes join कर रखा है तो कौन से? Okay. So then we have abundant of packages. Okay. तो उस packages को अपन लोग refer तो करते ही है, but ये भूल जाते हैं NCERT is the foundation. चाहे जितना भी कुछ दिया हो ना उस package में, trust me that NCERT book is really important. तो वो पढ़ना. एंड अगर तुम लोग पूछते हो कि आउट ऑफ सिलेबस कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, तो आई वुड सजेस्ट अभी मत पढ़ो. फर्स्ट स्टिक टू योर सिलेबस. Stick to what is definitely going to ask. 95% of the questions are going to be from your NCERT. So first study that and then go for out of syllabus topics. जो out of syllabus जितने भी topics है ना वो बाद में पढ़ना. And then the fourth mistake, we do not take notes. Like at my time, मतलब मैं क्या करती थी ना, मैं नोट्स बनाती भी थी. मैं बहुत बड़े बड़े नोट्स बनाती थी. जो मैं लास्ट टाइम पे रिवाइज करने भी जाती थी ना, तो आई वॉज नॉट एबल टू रिवाइज दैट इन अ शॉर्ट टाइम. सो आई वुड सजेस्ट कि नोट्स बनाओ, ठीक है, बट ऐसे बनाओ कि 2 पेज में ना पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए. Because most of the time क्या होता है, during revision we are not able to study the chapters over and over again. ऊपर से अपन लोग जो बड़े बड़े notes बना देते हैं ना उसमें time भी जाता है. Plus on revision ना you can't revise that rapidly and revision is meant to be quick होना चाहिए. तो वो करना. एंड आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर मैं बोलूंगी, जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ते हो आप लोग 12th में, मोस्ट ऑफ देम हैव रिटन कि वो लोग 12th में, और जितने लोगों ने नया ज्वाइन कर रखा है, आई आस्क यू ऑल टू राइट योर नेम, योर क्लास, ताकि आई कुड डील विथ यू इन अ बेटर वे. सो यस, आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर क्या करना है, कंप्राइज एवरी, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स जो तुम्हें लगता है यू कैन फॉरगेट आफ्टरवर्ड्स, write that on a piece of paper. Try to make that revision, that short note, बहुत कंप्रेस तरीके से बनाओ इन 1 पेज और 2 पेज. ओके, क्योंकि कितना होगा, लाइक 100 चैप्टर्स है, सपोज अप्रोक्सीमेटली वी हैव कैलकुलेटेड 100 चैप्टर्स. ओके, तो अगर हर चैप्टर के आप लोग 1 पेज बनाओगे या लेट्स से 2 पेज बनाओगे कुछ चैप्टर्स के, तो 100 to 150 पेजेस हो गए. सोचो जब आपका नीट आता है या कोई भी एग्जाम आता है तो कितना इजी हो जाएगा यार. जस्ट 100 to 150 पेजेस एंड यू फील सो कॉन्फिडेंट, अरे मैंने तो पूरा सिलेबस रिवाइज कर रखा है. तो वैसे करना. ओके, ना फॉर बायो आई वुड सजेस्ट कि बायो, जब हम लोग का बायो होता है तो ऐसे नोट्स बना लेना कि वो एनसीईआरटी में ही रहे, क्योंकि लास्ट मोमेंट आई वोंट सजेस्ट कि आप खुद के नोट्स पढ़ो. मैं बोलूंगी बायो में, स्पेसिफिकली बायो में आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो. और एनसीईआरटी, सपोज कुछ भी आपका आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक आता है, ठीक है, आपने कोई मॉड्यूल में पढ़ा, कोई किसी टीचर ने पढ़ाया, तो आई वांट यू टू राइट दैट शॉर्ट नोट इन अ स्टिकी नोट एंड पेस्ट दैट ओवर देयर जहां पर एनसीईआरटी है, साइड में स्पेस दिया रहता है. तो मैं बोलूंगी वहां पे लिखो, वहां पे अपनी शॉर्ट नोट्स चिपकाओ, स्टिकी नोट्स के यूज करके. ओके, सो डू दैट, मेक शॉर्ट नोट्स, कंप्राइज योर शॉर्ट नोट्स. ऑल्सो अगर आप क्लास 12th में हो या फिर आपके, डेफिनेटली जो लोग क्लास 12th में हो गया, अगर आप लोगों ने क्लास 11 के शॉर्ट नोट्स या रिविजन नोट्स नहीं बना रखे हैं, तो ट्रस्ट मी, राइज इज ऑलवेज देयर, हमेशा रहेगा. एंड यहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ कितने सारे फीचर्स हैं जो आपको शॉर्ट नोट्स, लाइक अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है या आप शॉर्ट नोट्स बनाने में मन नहीं लगता है, तो यू कैन रेफर ओवर हियर. राइज ने बहुत कुछ चीजें यहाँ पे कंप्राइज करके, यहाँ पे कंप्रेस करके लगा रखा है. आप देख सकते हो यहाँ पे रिविजन है, रिविजन मटेरियल है, जहाँ पे आपको डायग्राम्स, फॉर्मूले, एवरीथिंग, आपको इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, विशाखा इज रिटन
class 11th is totally wasted because of corona time. Okay, Vishaka. So मैं बता देती हूँ like my last session was based on this, that the people, the students who have missed their class 11, they can surely check my recent one of my last presentations. Over there I've mentioned 1 year strategy plan for all those who are in class 12th, also for droppers, so that they can also compensate for class 11 जो उन्होंने नहीं पढ़ा है, जो मिस कर दिया है. So surely go and do watch that session, and I'm sure that's going to benefit you. And now here we come. You can see राइस के फीचर्स यहाँ पे आप देख सकते हो. आप यहाँ पे मॉक टेस्ट भी दे सकते हो. जैसा मैंने बोला एनसीईआरटी से स्टिक होकर देना है. तो ऑल द मॉक टेस्ट जितने भी है ना, सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड है. मैं बता रही हूँ, आप देखकर देखो. फ्री मॉक टेस्ट ऑन संडे. संडे को जाओ, यहाँ पे रजिस्टर कर दो अपने. फ्री है टोटली, इट्स टोटली फ्री. यू कैन गो संडे को जाओ, एक मॉक टेस्ट दो, एक देख कर देखो कि आपकी आखिर आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है. इवन इफ यू आर क्लास 11 12, नो मैटर्स, आपने नो, इट डजंट मैटर कि आपने कितना पढ़ रखा है. आई जस्ट वांट यू टू गिव वन एग्जाम. एक बार देख कर देखो. Okay, register yourself right after this session. After you see, you can go. Okay, Akshara has asked now how to crack physics within 2 months. So, Akshara, in which class are you? And Akshara, we have made a special session. One of my seniors, she has also made a session on this only, कि आखिर आप physics को कैसे deal करो. Okay, you are in class 12. So, 2 months में, why do you want to crack physics within 2 months? You have so plenty of months left for NEET 2022. Yeah. So you can go and give this mock test and all these things. You can see short notes यहाँ पे, revision material, all these things बहुत अच्छे से दे रखे. आप जाकर एक बार देखो. It's free of try, बिल्कुल free है. एक बार try करके देखो and trust me, it's going to help you. Now the fifth thing is we don't prioritize our chapters. तो जितने भी chapters होते हैं ना, हम लोग prioritize नहीं करते. कुछ भी लेके बैठ जाते हो. ओके, इतना सारा syllabus है, but we need to study smartly. कुछ भी chapter लेके नहीं बैठ सकते because there are plenty of chapters. And if you see last year trends, previous year paper questions, जो कि आपको राइस पे भी देखने को मिलेगा. यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके बनाया गया है कि आखिर कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर्स में. यू कैन सी आई हैव आल्सो मेड अ शॉर्ट अ ग्लिम्स दिखाया मैंने कि आप राइस पर जाकर कैसे देख सकते हो. यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटनी में कि बॉटनी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 28 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. तो आपको प्रायोरिटाइज करना है सबसे पहले. अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो, कोचिंग ले रहे हो तो वेल एंड गुड, यू कैन स्टडी अकॉर्डिंगली जैसे भी पढ़ाया जा रहा है. बट इफ यू हैव नॉट टेकन कोचिंग क्लासेस, तो आप जाओ, ये चैप्टर सबसे पहले पढ़ो. यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिक्स का भी लिखा हुआ है, मैकेनिक्स है. मैकेनिक्स में से 98 क्वेश्चंस. यहाँ पे अगर मैं आपको ऐप भी खोल के दिखाऊंगी, ओवर देयर वी कैन सी मैकेनिक्स में कितने चैप्टर्स आते हैं, उन चैप्टर्स में भी कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं. आई शो यू ऑल ऑफ दीज. टिल देन स्टे कनेक्टेड. Yeah. So let's move forward to the sixth mistake. Now comes the sixth mistake, and that is like मेरे साथ बहुत होता था. मतलब जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, we had to give online exams, and because of that I was not giving my exams on OMR sheet, जिसके कारण मेरे बहुत bubbling mistakes हो रहे थे. Like जब मैंने OMR sheet से start किया, तो बहुत late realize किया. I realized it quite late. Until the time I realized it was just like 20 days left for my exam. तो उन 20 days में, all those 20 days I practiced it on OMR sheet. So I want you कि आप जाओ, कोई भी टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे रहे हो ना, तो ट्राई करो, आप कहीं से अरेंज करो. OMR sheet is available on all, like गूगल कर लो, आप वहां से डाउनलोड कर लो. गो एंड हैव द हार्ड कॉपीज एंड देन उस पर करो आप बबलिंग, सो दैट कोई भी बबलिंग मिस्टेक नहीं हो. कोई भी ऐसी मिस्टेक करनी ही नहीं है आपको. जो भी करना है ना, बहुत अच्छे से करना है. Okay, so Shruti has asked how many hours want to read for NEET. Okay, so for NEET, basically you're asking how many hours should we study. So like it's not fixed. Okay, now it definitely depends upon
योर कैपेसिटी। सपोज आप 10-10 घंटे रोज पढ़ते आ, so it's quite easy for you to extend it to 12 hours per day. पर मैं बोलूंगी इफ यू आर लाइक इन क्लास 12 या फिर 11, सो आई वांट यू टू स्टडी नॉट फॉर 12 आवर्स और 10 आवर्स, आई वांट यू टू स्टडी जस्ट फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे पढ़ो और बहुत शिद्दत से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो ना, पूरा कंसंट्रेशन जो दिमाग है ना पूरा वहीं पे लगे उस 4 घंटे में, और वो पढ़ो। फिर आप और जितने टाइम बचते हैं ना एंजॉय करो, क्योंकि आपको अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है, आपको खुद को एंजॉय करते हुए पढ़ना है। ओके, 4 घंटे पढ़ो बस। उसके बाद जब 2 महीने जब बचते हैं ना बिफोर नीट, यू कैन गो एंड स्टडी फॉर 10 आवर्स। तब तक यू विल हैव लाइक जस्ट बी कंसिस्टेंट, दैट्स मच मोर देन इनफ। ओके, तो वो करो। अभी बस 4 घंटे पढ़ो, पर शिद्दत से पढ़ना। ओके, बिल्कुल शिद्दत से, इतनी शिद्दत से कि मत पूछो यार। फिर द सेवन थिंग इज वी डोंट यूटिलाइज अदर सोर्सेज। हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज यार, we have YouTube, we have so many things. Even if you are getting distracted with your phone, you can use some of the resources that are available. You can use some of the app logs. तो बहुत सारी चीजें हैं यार जो आप यूज कर सकते हो। यू कैन यूज योर हाईलाइटर, जो घर पे मैं होता है मैं वो बता रही हूँ। हाईलाइटर यूज कर सकते हो, मार्कर यूज कर सकते हो, यू कैन क्रिएट योर ओन चार्ट पेपर, जो own way of like flow chart बना सकते हो। You can highlight the basic points in NCERT. You have that just मतलब अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना उसको निकाल के लाओ यार, एंड इतने अच्छे से पढ़ो, मजे करके पढ़ो। एंड देन जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं ना वो स्टिकी नोट्स पर चिपका लो। जहां भी आप उठते हो, जहां देखते हो वहां पे एक चिपका लो, जहां पे आप ब्रश करते हो वहां पे एक चिपका लो। ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह ना चिपका लो ताकि वो चीजें ना बहुत रिटेन होती है। मैंने मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ था, आई लिटरली रिग्रेट दिस पॉइंट, या फिर व्हाई डिड नॉट आई यूज दीज रिसोर्सेज, मैंने क्यों नहीं पेस्ट करा वो, क्यों नहीं, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होता है। लास्ट मोमेंट में आपको लगेगा ओ मैंने तो ये पढ़ रखा है। एंड देन द थर्ड थिंग आई वुड सजेस्ट, राइज ऐप। ठीक है, राइज ऐप पे ना सारी चीजें बहुत अफोर्डेबल है। लाइक मेरे टाइम पे आई डिड नॉट नो अबाउट एनीथिंग एज सच कि जो सेल्फ स्टडी को स्ट्रैटेजिकली इतने अच्छे से मतलब हम लोग को हेल्प करेगा। हम लोग कोचिंग भी जाते तो भी सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, हम लोग नहीं भी कोचिंग जाते तो भी आर सेल्फ स्टडी इट लैक्स समवेयर, we're not able to plan, we're not able to execute. तो उसमें ना आपका राइज इट हेल्प्स, इट हैज सो मेनी फीचर्स। Error exam where you can practice all the errors that you do in practice test, mock test on this app. तो आपके जो मिस्टेक्स होंगे ना वो इम्प्रूव होंगे। फिर आप रिविजन मटेरियल, एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, रिविजन मटेरियल आप यूज कर सकते हो। टाइम कम है, रिविजन मटेरियल खोल लिया राइस का, देख लिया झटके से, एंड देन वी हैव कस्टम एग्जाम, वी कैन क्रिएट आवर ओन एग्जाम। हाउ क्रिएटिव इज दैट, इजंट इट? हमें क्लास 11 का, बहुत लोग यहाँ पे क्लास 12 के 11 के, यू कैन स्ट्रिक्टली choose, you can filter your chapters, your क्लास, योर टॉपिक्स, एंड उन चैप्टर्स के एग्जाम्स बना सकते हो। आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, उनका अलग से बना सकते हो आप एग्जाम। सो हाउ क्रिएटिव इज दैट? यूज इट, यूटिलाइज इट। परफॉर्मेंस एनालिसिस, डेफिनेटली वन ऑफ दीज मिस्टेक्स इज दिस ऑल्सो कि हम लोग अपने जो जितना भी वट एवर वी परफॉर्म ना, वी डोंट एनालाइज इट। You have to analyze your performance, that's really important, because हम लोग क्या करते हैं ना अपने मिस्टेक्स को रहने देते हैं। और मिस्टेक्स, ये दिस एंटायर सेशन इज ऑल अबाउट मिस्टेक्स। जो मिस्टेक्स करे उनको इम्प्रूव करना है, उनको अपना स्ट्रेंथ बनाना है, दूसरों के भी मिस्टेक्स को अपना स्ट्रेंथ बनाना है। रिमेंबर दैट, एंड दैट विल मेक यू सक्सेसफुल, रियली सक्सेसफुल। अभी मैं भी चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के मिस्टेक्स जानूं, सो दैट आई कुड लर्न फ्रॉम यू, आई कैन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। क्यों सिर्फ तुम ही लोग वाइज बनो यार, मुझे भी वाइज बनाओ। शेयर ऑल योर मिस्टेक्स, जितने भी आप लोगों ने कर रखे हैं, जितने भी आपको लगते हैं कि मिस्टेक्स आप कर रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू इम्प्रूव ऑन दैट। देन वी हैव लिंकेज पेपर, ऑर्गेनिक होता है, हाइड्रोकार्बन से आ जाता है, जनरल केमिस्ट्री से, बहुत सारे चैप्टर से मिला मिला कर ना क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को कैसे डील करें आप, तो उसके लिए लिंकेज चैप्टर, यू कैन गो एंड वो जितने भी लिंकेज क्वेश्चन है ना, चार पांच चैप्टर्स को मिलाकर, वो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि आखिर ये चैप्टर प्रायोरिटी पर होता है, तो यू कैन डेफिनेटली यूज ऑल दीज थिंग्स एंड यू कैन
definitely you should, you know, utilize your resources. Now the eighth mistake, we misuse social media. यार social media ना बहुत प्यारी चीज है यार, मैं बताऊँ तुम्हें तो, like it is one of the things I personally use, और मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, MBBS स्टूडेंट हूँ, तो मैं नहीं बोलती हूँ कि सोशल मीडिया बुरी चीज है, बट क्या होता है ना कि अभी लाइक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि अगर बाय चांस इट इज डिस्ट्रैक्टिंग अस, तो अनइंस्टॉल कर दो, बिकॉज इट्स योर करियर डूड। आपका करियर है अभी आपके हाथ में, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स, कि आखिर वो सोशल मीडिया विच यू आर यूजिंग विच इज डिस्ट्रैक्टिंग यू, जो बाद में कुछ नहीं हेल्प करने वाला है यार, इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू एट ऑल, बट इफ यू क्रैक मी, इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू रियली वेरी मच। उसके बाद आप जितना सोशल मीडिया यूज करना कर सकते हो। मैं दिन भर बैठे रहती हूँ, मैं पढ़ती भी हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं रोज पढ़ती हूँ, मैं सोशल मीडिया भी यूज करती हूँ, एंड आई यूज ऑल दीज थिंग्स, सो आई वांट यू। यस, विशाखा इज रिटन बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इज सोशल मीडिया। डेफिनेटली यार, मेरे टाइम मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता था, लाइक आई यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम, एंड दिस वॉज वन ऑफ माई रियली, मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक था मेरा, एंड उसके कारण मेरे मार्क्स भी गंदे आए थे लाइक कुछ एग्जाम्स में। तो मैं चाहूंगी आप लोग ये मिस्टेक ना करो। अगर आपको इंस्टाग्राम से होता है डिस्ट्रैक्शन, डीएक्टिवेट, अभी निकालो इंस्टाग्राम, अभी डीएक्टिवेट करो। 3 महीने बाद आप अगर कुछ अच्छा अचीव करते हो, यू कैन इंस्टॉल इट, ओके। फिर थोड़े दिन यूज करो, अनइंस्टॉल कर दो। मैं वो करती थी यार, डोंट यूज इट फ्रीक्वेंटली, ओके ना। अगर आपको नहीं लगता आप फ्रीक्वेंटली यूज करो, तो आप इंस्टाग्राम रख सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फिर अगर आप व्हाट्सएप बहुत डिस्ट्रैक्ट कर, आपको पढ़ने नहीं दे रहा, आपके फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं पता है कैसे व्हाट्सएप यूज करती थी, मैंने एक ग्रुप बना रखा था, आई हैड अ ग्रुप मेट which just included those people who were preparing for NEET, and they were really sincere people. So we all people, we had this plan ki is then we'll study this chapter, we'll target this chapter, and we'll share some of the question papers on that WhatsApp group. So I used to utilize WhatsApp. If you have any resource, utilize it. Don't don't ever misuse it. Okay. Okay. Neha has asked, ma'am, how to focus on physics and chemistry. Well, I'll surely tell this doubt, Neha. Just stay connected. बस देख रहे हो आप, 8 पर आ चुके हैं अपन लोग, बस 2 और बाकी है, उसके बाद मैं तुम्हें तुरंत बताती हूँ कि आप कैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के डाउट्स। जस्ट स्टे कनेक्टेड फॉर सम टाइम, ओके। और मैं बोलूंगी कि अगर आपको यूज करना भी है ना इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, लाइक मैं क्या करती थी, आई यूज टू यूज देम एज रिवॉर्ड्स। मैंने कोई चैप्टर दिया, अगर बहुत अच्छा मार्क्स आए, तो मैं खोलती थी, मैं एक्टिवेट करती थी इंस्टाग्राम, मैं व्हाट्सएप इंस्टॉल करती थी, और मैं बहुत अच्छे से यूज करती थी, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। उसके बाद फिर से मैं जुट जाती थी अपने पढ़ाई में। आई यूज टू स्टार्ट स्टडिंग, एंड आई यूज टू स्टडी माई थिंग्स इन अ मोर प्रोडक्टिव वे। आई वॉन्ट यू टू गेट रिफ्रेश्ड, कि आप टाइमली ना रिफ्रेश भी होते रहो, सिर्फ पढ़ते मत रहो। लाइक व्हेन आई वाज इन कोटा, मैं कोटा से मैंने कोचिंग किया है, तो मैं क्या करती थी ना, लाइक फॉर मी phone was a great disadvantage. I used to distract, like that phone used to distract me so much, मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता था मुझे। तो मैं क्या करती थी, लाइक आई यूज टू, लाइक मेरा जो फोन होता था ना, वो स्मार्टफोन था, लाइक मैं चाहती तो नोकिया भी रख सकती थी, मैंने रखा भी था लास्ट 2 मंथ्स में। बट फिर जब तक मेरे पास मेरा फोन था ना स्मार्टफोन, मैंने क्या किया था, उसे अपने लॉकर में, मेरे कबर्ड में देयर वाज अ लॉकर गिवन, एंड आई यूज्ड टू लॉक माय फोन इन दैट लॉकर। लिटरली मेरे 4 दिन हो जाते थे, एंड आई डिड नॉट टेक दैट आउट फोन। मैं रूम में रहती थी जब ऐसी छुट्टियां होती थी, और ऐसे कॉल करना रहता था मम्मी पापा को, तो वो भी मैं कर लेती थी, ऐसा नहीं है। या फिर अगर ऐसा भी होता ना कि लॉकर में रखा है, बट टेम्पटेशन इतनी ज्यादा है दैट उसे खोल कर हम लोग निकाल देते हैं, तो मैं क्या करती थी, मेरे फ्रेंड्स होते थे, लाइक दे यूज टू लिव इन अदर हॉस्टल्स, द हॉस्टल्स जस्ट ऑपोजिट टू माई हॉस्टल। मैं क्या करती थी, उनको जाके दे देती थी, लो यार रख लो मेरा फोन, मुझे नहीं चाहिए, मुझे 2 दिन बाद देना, उसके बाद मैं यूज करूंगी। मैं अपने पेरेंट्स को, अपने बगल वाले जो बगल वाली, मेरे रूम के बगल वाली जो फ्रेंड थी, मैं उसका नंबर दे देती, उनको उसको कॉल कर लेना, वो मुझे बता देगी। सो आई यूज टू डू सच थिंग्स। मैं हर चीज को ना, ऐसे में कभी डिस्ट्रैक्ट, कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए यार जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट करती ना, उसको हटाओ, फेंक दो, ठीक है। मतलब बैलेंस स्लीप बहुत लोगों के, ओके नेहा, या श्योर। सो बैलेंस स्लीप, इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट वी बैलेंस आवर स्लीप। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना,
Like most of the time, it so happens that we're not able to balance our sleep. Like sometimes we sleep for long hours. Like for instance, myself, if I talk about me, I used to sleep for like for hours. Now also I sleep for hours. Like some people have also saved my name in their phone as Kumkarni. I don't know why. I don't sleep itna bhi nahi soti hu, but still. But like don't sleep too much or too less. Okay, just like what we do. Okay. Yeah, Vishaka, I know. Even I could not. And I'll tell you one trick. Uh, you can definitely then balance your sleep in a really productive way after I tell you the trick that I used. For me also, like it was really, matlab, like I could not control my sleep. So yeah, I used this trick. So I will tell you. So it's really important. Like minimum 6 hours and maximum 6 hours of sleep is really, really essential. You can't sleep less than 6 hours. Most of us क्या करते हैं? On regular days, on normal days, we sleep for hours. We don't have to study. We procrastinate things, and then on exam days, what we do? We sleep for just 3 hours, 4 hours, or we don't even sleep, most of us. I was not among them that I would sleep just 2 hours or 3 hours. I was among those people who used to sleep for hours even on exam days because I wanted to sleep. I wanted enough of my brain to be active when I'm giving exam because when your brain is active during the exam now, even if you don't know the things, your subconscious mind will become active and get you that answer. So I want you to sleep nicely. And like Vishaka asked me this question, like how to control sleep. So I would suggest you use this technique. Use Pomodoro technique. That's a really common technique. Most of the people must have told you, but this is quite a modified Pomodoro technique. Like I would suggest 25 minutes per okay? Like all the people tell you, 25 minutes. Focus all your powers, all your brain on your studies, okay? 25 minutes, then take a break. 5 minutes, 10 minutes, whatever you want to, okay? Then what you do is, why do we feel sleepy while studying? That is because that is because yeah. So why do we feel sleepy? That is because the oxygen level which is reaching our brain, that is not sufficient. So we have to make that sufficient. So what we will do in that 5 minutes, we'll start skipping. We'll start skipping or we start dancing. Turn on your favorite song or I used to turn on my motivational song. Like I had a list made of just motivational. Excuse me, ma'am. Speak again what you say in few minutes because yours. Okay. Yes, Vishaka. So, like, see, what you have to do is study for 25 minutes, okay? Then 5 or 10 minutes, you take a break. And what you do in that 10 minutes is you do some sort of exercise so that your blood circulation increases and it goes to your brain. It supplies oxygen to your brain and it becomes active. And you're able to grasp the studies even more productively. Like, I used to turn on some motivational songs and I used to skip around so that I had blood circulation on also and I also had motivation. That 5 minutes used to be my motivational session plus my exercise. Most of us keep साथ क्या होता है? Like we sit for hours and hours studying, and we become so fat and obese, and we feel lazy and against more sleepy. So I want you to exercise also to become motivated also and study also productively. That too productively. Yeah. And the 10th one, my favorite point, don't become a nerd. This is not like I did not do this mistake. I was never a nerd. I've always used to enjoy my life. Like, first of all, I would tell you, NEET is a destination, okay? And that destination is going to be beautiful only when you are going to enjoy your journey. This is your journey. This is your preparatory phase. Even if you're study it as if you're enjoying it. Okay, study like that. Make it beautiful. Make your journey really beautiful. And trust me, when that destination you'll arrive now, you're going to say, "Oh my God, it was worthwhile. My preparation was worthwhile." And I can definitely say that. I enjoyed a lot. I studied a lot. I was so much focused. I used to dream also a lot, but I did not waste time dreaming much and much more. Okay, now you don't need to become serious. You need to become sincere.
This was one line said to me by one of my faculties in Kota, and he said me, don't become serious. Like most of us, we become serious. Okay, पढ़ना है अब तो जान लगा के पढ़ना है. नहीं, you have to become sincere. You have to prioritize. Okay, this time I have to study. This time I have to enjoy. I'm not saying to use social media. You don't enjoy by using social media or your phone. No, don't use social media. Rather, indulge yourself in some extracurricular activities, which is going to relax you, which is going to entertain you, which is going to refresh you. Reward yourself. I've said in all the points, reward yourself is a major technique which will encourage you to study. So reward yourself. कुछ भी होता है, reward yourself. Celebrate it. Celebrate all your success, mistakes, failures. But yes, you have to stay focused on one dream, and that is NEET. Now, what? How can we reward ourselves? First of all, मैंने बोल दिया like कि कुछ भी like you can activate your Instagram, you can install your WhatsApp. But also you can what you can do is you can go for parties. Like मैंने WhatsApp group बना रखा था. I used to share like some of the questions we used to share to each other. And after that, we used to decide at the month. Okay, what is the meaning of nerd? Well, nerd basically means a bookworm. A bookworm who is always studying, who is not indulged in other extracurricular activities. We are like they are just studying. Yeah, you can understand. So yeah, don't just study, enjoy yourself. And when the time you're studying now, just study. Okay. So go on, go enjoy with your family, with your friends. That will refresh you because abhi nerd nahi banna. Like this time you don't have to become nerd. You have to, but definitely I will say suggest you one thing that just before NEET, when you have 2 months left with you have to study 24 into 7 at that time. That time, no nerd, nothing is going to come, no enjoyment. Just study because that time it's really important. Also, अगर अभी आप पढ़ लेते हो, right now if you go on study and studying like you become a nerd, you're going to become exhausted. You're going to exhaust yourself and you won't be able to study at that time, 2 months before, which is very essential, which is the key to success. That time is going to uh, bear more results. So don't become a nerd. Now, जैसा कि I told you at the beginning of the session that I'm going to show you a glimpse of Ames College. So this is my Ames College. You can see we go to several tours. You can see the Ames College on the occasion of Diwali it was, and we go to many places and so on. So it's really amazing. You can see the lecture hall. We do bonfires. We go on cycling. All these things. These things are amazing. Trust me, your preparation right now is worthwhile. So this is a quick recap. You can thank you, Vishaka. We have or agar if you want to have a more detailed session on my Ames college life, like my Ames life, college life. So again, write in the chat box. I'll surely make sure that if it is in demand, we'll surely make sure that we have such a session. Now, quick recap. You can take a screenshot of this. It's just a quick recap of what I told earlier. Okay, all the points related. So yes. So now it's the question answer session. So all your questions I'm going to answer right now. And this is the time you can ask all your doubts, anything you want to ask. कुछ भी है, पूछ लो. Okay. So even you can turn on your mic too. You can raise your hand and I'll unmute you. You can turn on your mic and we can have one-to-one conversation also. So let's see who raises his or her hand first. So here the competition begins again. Okay. So Sana has asked motivational songs like. So motivational songs like I had a playlist like we have Ashai, then Har Maidan Fateh, such songs. Like you can even go on YouTube and search. Like I used to really feel I used to get goosebumps after listening to such songs. That oh my god, I used to fantasize कि अच्छा मैं क्या कर रही हूँ, मैं सुन रही हूँ और मैं पढ़ रही हूँ. Like I used to imagine myself कि मैं बहुत रगड़ के पढ़ रही हूँ और फिर मैं पहुंच चुकी हूँ एम्स दिल्ली में. So that
टाइप ऑफ मोटिवेशन सॉन्ग सिर्फ सुनो मत, उसको फील करो. Okay. So Shruti has asked if we want to read at the morning, at what time we should start. Well, like my parents, they usually suggest me to read in the morning, and that's quite evident also, because in the morning your brain is really, really, fresh. It's totally fresh. After you have a deep sleep, like if you sleep for 8 hours, you are going to have 2 to 3 hours of deep sleep. And after that, if you wake up now, you're going to have a really fresh mind. तो हम लोग जो बोलते हैं ना 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो that's kind of correct also. What you have to do is you can wake up if it at all happens with you, Shruti. अगर तुम 4 बजे उठ पाती हो, then well and good. Like at my time, I used to wake up at 4 and I used to study, and that was really effective. What you study in the morning, it's really going to affect to be effective. But most of the people, they're not able to wake up in the morning, and they prefer studying at night. So it's really important. Okay, I can see people raising their hands. Okay. Okay, yeah. So first I'll unmute Neha because she had raised her hand so long ago. So okay, you can unmute yourself, Neha. Hi, ma'am. Hello, Neha. Hello, ma'am. Ma'am, how can we focus on physics and chemistry, ma'am? Means that two subjects are very hard. Yeah, I can relate it. Definitely, Neha. That's really relatable because at my time also, like biology is okay. We can study that from NCERT, but in physics and chemistry, we come across concepts. And that should be really clear. If you want to crack physics and chemistry now, our concept should be really clear. Like for physics and chemistry, you should first study the basic numerical tools that we are provided with at the start of class 11. Go through that. Even you can go through various YouTube channels where you will be given the basic doubts, the basic concepts, they are cleared over there. Okay. And you can definitely ask any doubt you have. My uh, Instagram account, if you face such problems again, you can definitely ask me over there. Okay, now I'm unmuting because we have little time left. It's just we'll end the session soon. So I'm going to unmute now Vishaka. So Vishaka, you can unmute yourself. Hi, ma'am. Hello Vishaka. Ma'am, how to study self? I'm unmuting you again. I could not hear your question. Ma'am, how to study self? Like you want to ask how can we do self-study, right? Okay, so for self-study, I would suggest it's really important first to plan. Okay, first plan the priority-wise chapters. Okay, because in some of the chapters are there which are yeah. Okay, I'm again unmuting you. Yes, Vishaka. So there are some chapters which are really important from where we get so many questions asked. Like you have seen on Rise, I show you in next session. In next session, you can see the practical, because little time is left. I won't waste it in opening the app. You can go. You can yourself install the app and you can check out all these things. Like you can go in previous year paper and you can see how the questions have been asked from each chapter, and प्रायोरिटाइज करो. ठीक है, हर चैप्टर प्रायोरिटाइज करो, पहले वो पढ़ो. फिर even we have many sections like self study को कैसे strategically आप पढ़ो. That is also I've done. My first session was based on that. You can surely go on YouTube and check that out. And yeah, so ऐसे कर सकते हो आप अपना सेल्फ स्टडी. लाइक पहले तो प्लान करो, फिर एग्जीक्यूट करो, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो. आप किस क्लास में विशाखा? Ma'am, I am in 12th class. या सो आपने 11 पढ़ रखा होगा, राइट? डिड यू स्टडी इट, मतलब तुमने सेल्फ स्टडी किया था? Not so good, ma'am. 11th class is not good Okay, yeah, I can because of relate that pandemic. too. Yeah, so that happens, Vishaka. So you can definitely आप पहले plan करो, फिर वो सारे chapters पढ़ो, फिर you can make short notes, you can highlight the points that are essential, you can you know um, फिर एनालाइज करो कहाँ पे आप रॉन्ग हो. एंड डेफिनेटली राइज ऐप जो है ना, बेसिकली मेंट फॉर सेल्फ स्टडी. आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आपको ये ऐप से बेटर कोई नहीं आपको हेल्प कर सकता है. Yes, आपको ma'am. सारे रिविजन नोट्स एक बार चेक कर लेना विशाखा. ये ऐप आपको डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी इससे. सो यस.
Ma'am, I can't I understand numericals of chemistry and physics because of some maths method. I can't take yeah. math. Okay. So I would suggest कि पहले जाओ YouTube पे जाओ, वहाँ पर you can get many videos related to like जिसमें वो पढ़ा रहे होंगे, like the very basic, from starting from the very basic. So I want you to start from the very basic side. Okay, go for maths tools. Okay, you go for maths tools, there you will get plenty of like videos जिसमें से choose करो according to your convenience. Okay, so people are asking, so I'm giving my Insta ID so that all of you can, if you have any queries, you can definitely go and ask me over there. So yeah, so I have written it over there. You can definitely go and ask all your queries. I'm going to solve it in a mo. Okay, Neha has also written. Thank you, Neha. सो यस, सेल्फ स्टडी की बात रही तो प्लीज एक बार नीट राइज ऐप चेक कर लेना एंड प्लान करो, फिर एग्जीक्यूट करो, परफॉर्मेंस एनालाइज करो. दैट्स ऑल आई वांट टू सजेस्ट यू. एनसीईआरटी पर स्टिक रहो. Okay, so hello Charan. Charan has asked how to manage time in exam hall. That's a really nice topic, and I really want to tell you कि हम लोग के कुछ next sections जो आएंगे, that is going to be based on this, because trust me, like earlier I could not manage my time in the exam. During the exam I used to I could not even read some of the questions because of lack of time. But after practicing, like when I was about to give my NEET, just before 1 to 2 months, I could solve the entire paper in just like 1 hour 45 minutes. You can imagine, and even I could not believe at that time. Oh my god, how such a drastic change! That's because you're confident. When your confidence increases now, automatically your efficiency increases, your accuracy increases. So go and practice more and more MCQs, more and more question papers, and that is going to manage your time. I mean, gradually it will manage your time, and you will have a surprising effect. ओके, विशाखा सेड मैम आपको देखकर लगता नहीं कि स्टडी करना इतना हार्ड है. डेफिनेटली नॉट यार, बिल्कुल नहीं हार्ड है. ट्रस्ट में, मुझे भी लगता था बहुत हार्ड है, मुझे मन नहीं लगता था. फिर आई सैट डाउन और मैंने सेल्फ रियलाइज किया कि इट्स नॉट दैट हार्ड, इट्स रियली इजी. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू एंजॉय इट, बिकॉज यार लाइफ को क्या मोटिव है, यू जस्ट हैव टू एंजॉय योरसेल्फ. ओके, सो यस, you can raise your hands. If you can, I'll unmute you, you can turn your mic on. Okay, Neha is again. Okay. Yes, Neha. Ma'am, for physics and chemistry, NCRT is enough, for any other reference books we should use? See, NCRT is enough for all the three subjects. But the thing is now, we're not able to study NCRT theory wise from NCRT. We cannot study in case of physics and physical chemistry, because that becomes really vast. And I would suggest ki, don't do it, because it's going to waste your time only. So for organic chemistry, inorganic chemistry, go for NCRT. And bio also, definitely bio के लिए तो NCERT is really important. But for physics and physical chemistry, what you have to do is you have to go for concepts, because application based questions are more asked. Okay, तो ये पहले करो. Okay, तो उसके लिए तुम क्या करोगी, उसके लिए you can go on YouTube, you can search for the concepts, the basic concepts, and you can study from there. Yeah, I hope, Neha, you want to ask anything else? Yeah. Okay, so okay, Vanshika has written because people discourage most. No, I mean, I don't. अगर कोई भी इंसान, if people are discouraging you now, don't talk to them. Okay, don't talk to them. मतलब you can talk to them, but try to ignore all the discouragement that they are giving you. Okay, don't focus on that. Your preparation is your preparation. You have to dream. You know your potential, your capabilities, and you said you choose a very hard goal and it is necessary. You should study 10 hours minimum. Sometimes people demotivate you. Yeah, people are there who demotivate you. Even my people, like relatives are there जो हमेशा पूछते रहते हैं, यार बेटा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. So you don't have to become demotivated. Okay,
and it's not necessary to study 10 hours. 10 hours कौन पढ़ते हैं? जो 4 घंटे ना अच्छे से नहीं पढ़ पाते, शिद्दत से नहीं पढ़ पाते, वो पढ़ते हैं. You have to जो 4 घंटे पढ़ो ना वो शिद्दत से पढ़ो. Okay, so Charan has asked how many marks we can gain by NCERT. 95%. If अगर पता है चरण, if you have done your NCERT मतलब अच्छे से thoroughly, you are going to get 95% marks, and that's what I guarantee you. The rest 5% are out of syllabus questions which you can't predict beforehand. That's totally unpredictable. You can't predict. Okay. Niyaz asked, ma'am, will you share your timetable with us? Definitely. Like basically what happens with me now, I used to prepare timetables every now and then. तो मैंने क्या किया, and I could not follow that because most of us ना, हम लोगों के साथ क्या होता है, टाइम टेबल हम लोग बनाते तो हैं बट फॉलो नहीं कर पाते. तो आई वुड सजेस्ट कि यार टाइम टेबल मत फॉलो करो. क्या करो, यू जस्ट टाइम बाउंड करो, टाइम बाउंड योर टाइम like 4 hours in a day you are going to study, and that time you're not going to do anything. किसी को भाव नहीं देना. You don't have to give importance to anything. You just have to study. Earthquake comes, volcano erupts, nothing is going to matter. You are just going to study at that time. So as a time, you can manage your time, but you should not strictly like constrain yourself in some like I want to wake up at 5 a.m. No, ऐसा कुछ मत करो. Don't write it because it's not going to, because most of us can't follow that. So don't do that. That's mostly a waste of time. But still, if you want, like, I will still think about my team timetable and I'll surely share with you guys. Okay. So according to me, ma'am left online classes. We get 4 hours. Okay. Yeah. For like, if you don't consider excluding the online classes, I would suggest 4 hours self-study just. Okay. So now let's get over all the questions. I was really happy that you asked so many questions. Next session, maybe my answer karungi. Till then, you can follow me and ask your queries on my Instagram account. And you can see, right, बहुत सारी features है. Linkage question, linkage chapter, previous year paper analysis, edit exam, revision material, custom exam, performance analysis. Yes. So all these features are going to help you a lot. Trust me. Try करके देखो. Free trial है. बहुत बहुत मजा आएगा. एक बार ट्रायल करके देखो. सेल्फ जितने लोग कोचिंग जाते हैं, नई कोचिंग जाते हैं, सब लोग ट्राई करके देखो. एक दफा करके देखो यार. ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा. आई कुड नॉट मतलब मैं यूटिलाइज नहीं कर पाई ये सारी चीजें, बट आई वांट यू कि वो मिस्टेक नहीं करो. आपके पास ये मौका है. यूटिलाइज इट. ओके. Thank you, Vishaka. It's really encouraging that you guys are saying this. So now comes the subscription plans. Akhir, if these features are available, so these features are really affordable. You can subscribe and you can get benefit from these. You for self-studying people, you can go. So 1 month subscription and 3 month subscription and 6 month subscription and 12 months. All these things are available in the subscription plan feature on Rise app. Install करो अभी देखो और देखो. And also डिस्काउंट मिल सकता है गाइस. डिस्काउंट जो सबको चाहिए होता है यार. डिस्काउंट पता चलता है ना, मैं तुरंत भागे चली जाती हूँ कहीं पर भी. तो यहाँ पे भी आपको मिल रहा है डिस्काउंट. ओके. So use my promo code Sakshi Neet. You can see on the screen. Sakshi Neet करो, यूज करो. डिस्काउंट मिलेगा यार. इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. वहीं पे डिस्काउंट मिलेगा. और इससे ज्यादा क्या चाहिए? अफोर्डेबल रेट में ऊपर से डिस्काउंट मिल रहा है डूड. ऊपर से साक्षी नीट यूज करो. इनडायरेक्टली मुझे भी सपोर्ट करोगे यार. तो करो. अभी जाओ, अभी देखो. राइज ऐप खोलो. मजा आए तो पक्का. और ये जो प्रोमो कोड है ना, दैट इज नॉट अवेलेबल. आपके बहुत टाइम के लिए नहीं है. सिर्फ आज रात के लिए 11:59. गो एंड यूज इट. यूज करो, यूटिलाइज करो. एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. जितने भी लोग हैं, 11th वाले, 12th वाले, जितने भी लोग देख रहे हैं, I want all of you to succeed, and I want most of you to see, I want to see most of you in AIMS Bhopal. जल्दी आओ यार, तुम लोगों का वेट कर रही हूँ. जल्दी आओ. So thank you very much for being with us, for staying connected throughout the session. I hope this could benefit you. So yes,